Okay, what we did that today's world undergraduate curriculum, particularly the MBBS curriculum, whenever we teach something, we usually go for the theme. And as we have started here, the theme is the right iliac fossa pain. And as in the previous video, we have already seen that what we do with the abdomen, we divide the abdomen into 9 areas, and these 9 areas are these 9 areas. And if this is abdomen, then this area is called right iliac fossa. Here we have umbilicus, though this is right iliac fossa. So this place is where we said the appendix and the beginning part of the large gut, which is called cecum, the appendix, the cecum, and entry of the small gut lies. But in case of female, there can be an ovary over here. This was in our lecture 1. Now today we concentrate on the theme pain and we concentrate on appendicitis, but what we will do that we will relate many of these things to the position of the appendix. In the lesson 1, we went for a little small clinical features related to whatever we explained as anatomy, physiology and pathology of the appendix. Now in this lecture, what we are looking at here, that ileum, this is the ileum, this is the stomach, this is the diaphragm, this is the liver, this is the spleen, and the spleen is under the ribs, and this is the stomach, this is small gut, and we have seen that in the small gut the fluid like food comes. Food churn here and the fluid like food comes here, enters the cecum. Now this place is now the large gut, and if we look at the large gut travels up like this, goes like that, come out, and then it comes like this out of the body in the what is called anus. So this place is anus. Now from here downward is pelvis. This is pelvis, the pelvic cavity. This is pelvic cavity. Okay. Now this is the pelvic cavity I have drawn. Now in this pelvic cavity, if we look at the cecum, this is the cecum, and as we said that this is the ileum. Ileum, the things come to the cecum, and things, if everything is normal, like the open appendix, which is tube-like structure, 6 inches long, and the things can go in and they can go out. But as we yesterday in our previous lecture said that if it is blocked here, this whole place becomes red and the appendix becomes hot, red, inflamed. We also said that the pain usually starts here in this region, and this pain later shifts to the right iliac fossa, and then the pain lies here in the right iliac fossa, and the reason being that in a minute I am going to explain that if you look at this person lying down, this is the chest, the head of the person, chest, and this is the diaphragm, this is the diaphragm, and below that is the abdominal cavity. Here is a large gut, and if we look at this, we find the black line
the black line is an envelope. It is covering inside everything, this black line. All right, I'm making it double. This is black line is called parietal peritoneum. Parietal peritoneum, and this is sensitive to pain. Parietal peritoneum. This is sensitive to pain. As it is sensitive to pain, whenever the appendix touches this parietal peritoneum, which now I have drawn like this. This is the red envelope that I have drawn, the abdominal cavity. When it touches this parietal peritoneum, there is a pain, and the pain is so severe that the patient forgets of this pain and actually feels this pain. So the pain which is here is only due to common nerve in the brain. That's why initially there is a pain over there. But it shifts here only because the parietal peritoneum, that red envelope, is gets inflamed. Now, it's very important to know the position of the appendix. If the appendix, जो कि most cases में appendix जो है para-ileal होती है, वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ. ये आइलियम है, आइलियम के ऊपर इस तरह अपेंडिक्स आई हुई है यूं. अगर ये पैरा-आइलियल हो अपेंडिक्स, तो यहाँ पर ऊपर ये अपेंडिक्स इस जगह पड़ी होती है, तो यहाँ पर पेन महसूस हो सकता है. लेकिन अगर अपेंडिक्स नीचे आकर पेल्विस तक आ जाए, तो ये पेन जो है, तो ये ऊपर की स्ट्रक्चर्स जो हैं इसके ऊपर जब आप हाथ लगाते हैं यहाँ पर, तो दर्द इतना महसूस नहीं होता, बहुत डीप दर्द महसूस हो सकता है. लेकिन फिर इसको कंफर्म करने के दूसरे तरीके हैं. अब एक मसला कुछ और होता है. कभी कभी जब अपेंडिक्स ये अगर हम लगाएं कि यहाँ पर सीकम है, ये सीकम है, ये अगर हम इसको अगर सीकम को ले लें, से फॉर एग्जांपल ये सीकम है और यहाँ पर स्मॉल गट आई हुई है ये, और हम यहाँ पर से अपेंडिक्स लेते हैं, तो मैं इसको रेड में ड्रॉ करता हूँ. तो ये अपेंडिक्स अगर यहाँ पर आकर इस मसल, जो कि ये मसल है, इसको टच करे या इसके ऊपर इस जगह को टच करे, तो ये मसल जिसका नाम है श्वास मसल, PSOAS, श्वास मसल, ये श्वास मसल, इसको टच करता है तो पर्सन को पेन बहुत डीप होता है. वो बैक में पेन महसूस करता है इस जगह, लेकिन उसको आगे यहाँ पेन महसूस नहीं होता. लिहाजा कॉमन पोजीशन जो है वो पैरा-आइलियल है. इसमें लोगों को हाथ रखो, दर्द महसूस होता है. इसको कहते हैं टेंडर एंड रिबाउंड टेंडरनेस. और अगर पेल्विक हो तो बहुत डीप भी दबाओ तो शायद दर्द हो, लेकिन अपेंडिक्स हो सकती है. तीसरी पोजीशन जो है, अगर ये श्वास मसल के ऊपर चली जाए तो ये बहुत डीप बैक में पेन होता है, और सिर्फ ये टांग जो है इसको एक्सटेंड जब किया जाए तो ये जगह स्ट्रेच हो जाती है, तो पेन ज़्यादा हो जाता है. तो जब इस टांग को एक्सटेंड करके स्ट्रेच करें यूँ, तो मरीज़ को यहाँ दर्द होता है. वरना यूँ हो तो नहीं होता. यूजुअली मरीज़ लेटा होता है और उसने अपनी टांग को यूँ किया होता है, क्योंकि श्वास मसल के ऊपर से वो टेंशन हटाना चाहता है. जो ही आप यूँ करते हैं तो उसको दर्द होना शुरू हो जाता है. इसको श्वास साइन कहते हैं. ये पैरा-आइलियल जो है वो रिबाउंड टेंडरनेस करती है. ये जो पेल्विक है ये डीप टेंडरनेस करती है, और ये श्वास टेंडरनेस करती है. कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो अपेंडिक्स है, ये अपेंडिक्स इसकी जगह ये यहाँ पर डीप आ जाती है इस होल में. इस होल को कहते हैं ऑब्टूरेटर फोरामेन, और इसके अंदर एक मसल होता है जो मैंने यहाँ ड्रा किया है. ये ऑब्टूरेटर मसल है, ऑब्टूरेटर, ये ऑब्टू मैंने लिख दिया है.
ठीक है, ये ऑब्टूरेटर मसल है। तो ये जो ऑब्टूरेटर मसल जो यहाँ से गुजरता है, यहाँ से आता है, इसके ऊपर जब ये अपेंडिक्स आ जाती है तो उस वक़्त दर्द ना यहाँ डीप महसूस होता है, ना ऊपर महसूस होता है, ना ही ये टांग को यू करने से महसूस होता है। ये 3 पोजीशन हो गई। इस वक़्त दर्द कब महसूस होता है? जब ये मसल स्ट्रेच होगा। ये जो जगह है इसमें मसल है, स्ट्रेच होगा। वो मसल कैसे स्ट्रेच होता है ये मैं आपको अपनी टांग में करके बताता हूँ। ये बेंड करके अगर टांग को यूँ इंटरनली रोटेट, अंदर की तरफ रोटेट करें तो ये यहाँ से मसल खिंच कर बाहर आता है। अगर ये मैंने इंटरनली रोटेट की है तो ये मसल खिंच कर बाहर आता है। जब खिंच कर बाहर आता है तो फिर मरीज़ को पेन होता है। अगर अपेंडिक्स जो है तो वो पेल्विस में आ गई है तो इतनी डीप होती है कि ये जो एनस है उससे अगर हम फिंगर अंदर करें, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन इसे कहा जाता है, DRE एग्जामिनेशन। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, DRE एग्जामिनेशन। तो अगर यहाँ आ जाए तो फिंगर अंदर होती है तो ये जगह टच करती है, उस वक्त मरीज़ को दर्द होता है। इसके बाद अब बाकी बात अगले लेक्चर में करेंगे।